Hello, my dear lovely and beautiful students. How are you doing? I hope you are doing well. Well, this is your Pritam sir, and you are watching Pritam's English Mantra. आज रो वीडियो लेक्चर सीरीज रे आमे +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानकर आ गोटे पोएम डिस्कशन करिबा. से पोएम रो ना होची टेलीविजन, रिटन बाय रोल्ड डहल. ओके, ए पोएम को डिस्कशन करबा पूर्वरु प्रथमे आमे पोएट को सहित इंट्रोड्यूस हे जिबा. तो म ऑलरेडी पोएट को नेम कहि सारी छी जे पोएट को नेम हला रोल्ड डहल. तो ही वाज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट. तो जो रोल्ड डहल को विषय में पढ़िया पे जाउचे, से जने ब्रिटिश नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, अ पोएट, अ स्क्रीन राइटर एंड ए वॉर टाइम फाइटर पायलट. तमने रोल्ड डहल जे कि जने ब्रिटिश नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर एंड वॉर टाइम पायलट. इज वन ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स. तमने रोल्ड डहल करो सबुठार गोटे बेस्ट पोएम होची टेलीविजन. इट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 94 लाइन्स. माने ए एंटायर पोएम टा 94 लाइन रो पोएम. एवं एठी तुमको 94 लाइन पढिबो पडिबोनी. सीएचएससी पिला मानक पई मात्र 33 लाइन. बट टेलीविजन पोएम टी होची 94 लाइन रो पोएम. These lines are not separated into stanzas. Here they are divided into meaningful segments for ease of comprehension. तमाने सहज रे बुझिबा पई एगुडा को स्टैंजा आकार लेखा जाय नै. जो 94 लाइन पोएम टी एटा सहज रे बुझिबा पई एटा सेगमेंट करा जाय छि. ओवरऑल द पोएम इज अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स दैट टेलीविजन कैन हैव ऑन यंग माइंड्स. जे यंग माइंड ऊपर टेलीविजन नो नेगेटिव इंपैक्ट कोन पड़े तार ऊपर पोएम टी. इट आल्सो ऑफर्स द एडवाइस दैट चिल्ड्रन शुड रीड बुक्स इंस्टेड ऑफ वाचिंग टेलीविजन. तो ए पोएम टा मध्य एटा एडवाइस ऑफर करूची जे कोन द चिल्ड्रन शुड रीड बुक्स इंस्टेड ऑफ वाचिंग टेलीविजन. इन फैक्ट watching television dulls the mind, it kills the imagination. तो कंटिन्यूअसली टीवी देखिबा द्वारा गोटे छोट पिलार माइंड डल हो जाए, तार इमेजिनेशन मरी जाए. ऑन द अदर हैंड द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स स्टीयर्स द इमेजिनेशन. एवं जदि गोटे पिलाटाए टीवी देखिबा बदल रे बुक रीडिंग रो हैबिट को डेवलप करूची, तबे से तार इमेजिनेशन को स्टीयर करे. इट एनरिचेस आवर माइंड एंड गिव्स अस फूड फॉर थॉट. तो ये होची ए पोएम रो माने शॉर्ट सम एंड सब्सटेंसेस बा शॉर्ट समरी. एबे मैं पोएम को लाइन बाय लाइन हमें बुझिया पे चेष्टा करिबा. तो प्रथमे बुझिबा पोएम रो फर्स्ट 6 लाइन माने लाइन 1 to 6. ता पूर्व के देखि देबा से फर्स्ट 6 लाइन जोटा मु कहिबे पे जाउची से कोन लिखा जाईची. तो फर्स्ट लाइन लिखा द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी हैव लर्नड. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी हैव लर्नड सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न इज नेवर नेवर नेवर. नेवर 3 थर रिपीट होइछि. नेट देम नियर योर टेलीविजन सेट, और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल. एबे इस जो 6टा लाइन मु पढ़िली एको बुझिया पई ए लाइन ने थिबा वर्ड नोट को बुझि जिबा. तो प्रथम में इंस्टॉल मान तो ऑलरेडी समस्त जानि जे मेक ए पीस ऑफ इक्विपमेंट रेडी फॉर यूज. ता माने होछि इंस्टॉल. Idiotic thing माने कौन ना the program that telecast on television that capture the attention of little children for long hours and make their brain dull. तो एठी टेलीविजन को ही कुआ गला idiotic thing. एवं एठी आउटे कथा जो रहिला नेवर नेवर नेवर. ई जो नेवर 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 एठी 3 थर काई गेला ना द एडवर्ब नेवर नेवर नेवर. ई जो एडवर्ब ता 3 थर जो यूज हैला द एडवर्ब नेवर इज जनरली यूज्ड टू मीन नॉट एवर. तो नेवर माने होची नॉट एवर, बट एठी 3 थर काई रिपीट हैला ना द पर्पस ऑफ यूजिंग इट 3 times is to stress the avoidance of something not agreeable or not acceptable. तमाने किछि गोटे जोला acceptable नुहे, agreeable नुहे, ओके, तापरे ताको अवॉइड करिबा पई स्ट्रेस दबा पई एठी नेवर नेवर कुआ जे. तमाने 3 थर नेवर नेवर यूज करबा अर्थ से पोएट एठी माने स्ट्रेस देइ जंदी जे टेलीविजन केबे भी इंस्टॉल करो नाही. तो ये थिला जो स्टैंजा 1 किछि डिफिकल्ट वर्ड. एबे जदि हम तार मीनिंग को जेबा ताले कोन मासबा. तो स्टैंजा 1 न समरी टा कोन ना. इन दिस लाइन रोल्ड डहल इज एड्रेसिंग ऑल ब्रिटिश पेरेंट्स and even all parents, telling them that most important thing one must learn while raising children is to keep them away from the television set. तो ये जो स्टैंजा रे ये जो 6 ରୁ 7 लाइन जो स्टैंजा अछि 1 to 6 लाइन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी हैव लर्नड सो फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न इज नेवर नेवर लेट देम नियर योर टेलीविजन सेट, और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल.
tamane in these lines Roald Dahl is addressing all British parents and telling them that the most important thing one must learn while raising children is to keep them away from the television set. tamane sabutu bodo kotha hala jodi ghare pila achanti tale sabutu bodo kotha hala semanunku kebe bi television set agare basibaku dioni. He also says that it is possible to come to a better solution to the problem by not installing a television set in their homes in the first place. tamane se auri madhya suggest karichenti gote better option suggest karichenti je kahichenti je sabutu better घरे टीवी न लगेबा ही सबुठु बेटर. प्रथमे कहिचन जे जदि माने सबु तमे जदि जने पेरेंट्स इफ यू आर ए कंसर्न पेरेंट्स इफ यू आर एनीथिंग वरी अबाउट योर चिल्ड्रन्स फ्यूचर देन द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू जे तुम घरे पिला मानू केबे टीवी आगे बसिबा को दियोनी एवं बेटर ऑप्शन होची कोन ना घरे केबे टीवी लगाओनी. ओके ये थिला स्टैंजा 1 रु 7. एबे ई स्टैंजा 1 जो सॉरी लाइन 17 एबे लाइन 17 को नै जे हम क्वेश्चन देखिबा कोन हेई परिबो क्वेश्चन. तो प्रथम क्वेश्चन हेई परिबो हु आर बीइंग एड्रेस्ड टू बाय द पोएट एंड व्हाई. ए पोएम टाकू पोएट काहा को एड्रेस करूचंती एवं काहे की. ताले कोन हबो ना Roald Dahl is addressing the poem to all British parents in order to make them realize the harmful effects of watching television on their children. बुझिले कि नहीं. सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट द पोएट हैज लर्नड. तो कौन इंपोर्टेंट थिंग पोएट जानियो पाइछंती. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट द पोएट हैज लर्नड as far as children are concerned is that they should never be allowed to watch television as it fills their minds with junk. तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जहाँ पोएट रियलाइज करिछन जे पेरेंट्स माने केबे भी तांको पिला माननको टीवी देखिबा को अलाउ करिबा कथा नुहे काहे कि नै टीवी से मानको माइंड रे जंक रे भरि दिए. What better solution does the poet provide? ये जो टीवी बदल से बेटर सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करिसंती. द बेटर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम वुड बी नॉट टू इंस्टॉल द टेलीविजन सेट इन देयर होम एट ऑल. तो से गोटे बेटर सॉल्यूशन देइछन जे बेटर सॉल्यूशन जे घरे छोटो पिला अछंती तो बेटर सॉल्यूशन होची घरे आदो टीवी इंस्टॉल करंतु नाही. व्हाई डज द पोएट कॉल द टेलीविजन एन इडियट बॉक्स. ए जो लाइन रे तो टेलीविजन को से इडियट बॉक्स काहे कहिछन. द पोएट कॉल्स द टेलीविजन एन इडियट बॉक्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डलनेस इन द माइंड ऑफ दोज हु वॉच इट एंड फिल्स देयर माइंड विथ फुली स्टॉप. ता माने एथि पई से इडियट बॉक्स माने ए जो टेलीविजन को कहिछंती कारण ए टेलीविजन को जो छोट पिला माने देखिबे से तांको माइंड को संपूर्ण भाबे डल कर दबो बा से पिला मान को इडियट कर दबो. ओके एवं तांको माइंड रे फुली स्टॉप माने जो स्टुपिडिटी कथा गुडा सो माइंड रे भर्ती कर दबो एवं ता माइंड से गुडे इडियट हे जिवो. सो इडियट बॉक्स बोली ताको कुहा गला टेलीविजन को. व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द पेरेंट्स. व्हाट वुड बी ए बेटर थिंग. तबे ए जो स्टैंजा में बुझिले एथरे से कौन एडवाइस देचंती. द पोएट एडवाइसेस द पेरेंट्स नॉट टू अलाउ द चिल्ड्रन टू वॉच द टेलीविजन एंड कीप देम अवे फ्रॉम द टेलीविजन. इट वुड बी बेटर इफ द टेलीविजन इज नॉट इंस्टॉल्ड इन द हाउस. ये पिला माने आमे बुझिले लाइन 1 to 6 ताकु नै कोन कोन सब क्वेश्चन हे परिबो तार वर्ड मीनिंग कोन एवं से जो स्टैंजार समरी कोन. एबे जिबा लाइन 7 to 12 ता पूर्व के देखिबा 7 to 12 लाइन ले कोन लिखाई छी. इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव रीच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन दे लॉल एंड स्लॉप एंड लाउंज अबाउट एंड स्टेयर until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. ए जो स्टेंजेटी को बुझिबा पई प्रथमे यार वर्ड मीनिंग बुझिबा. प्रथमे गोटे वर्ड अछि गैपिंग. तो गैपिंग माने कोन ना वाचिंग विथ आईज वाइड ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तमने जो वर्ड थिला इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव वॉच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन. तो गैपिंग एट द स्क्रीन माने कोन हे गेला ना वाचिंग विथ वाइड माने आईज वाइड ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. They loll and slop and lounge about. तो loll माने कौन sit or lie or stand in a lazy or relaxed way. माने अलसुआ भरी बसिबा आ उठिबानी पूरा काउच पोटैटो पलटि जिबा अलसुआ परी पड़ी रहिबा. स्लॉप माने कौन लेज अराउंड. ता माने भी से थिंक सेमती अलसुआ परी सोई रहिबा. लाउंज अबाउट माने कौन टू बी आइडल. ए तीनटा को मीनिंग प्राय तो एका. पॉप आ गोटे मध्य से स्टैंडर्ड गोटे मीनिंग अछि. ए डजन ऑफ आई जो अछि आईज पॉप आउट एंड स्टेयर until their eyes pop out. तो पॉप आउट माने कोन कम आउट. त माने हम जानि गले ए जो स्टैंजा रे जो किछि डिफिकल्ट वर्ड अछि लाइक गैपिंग लॉल स्लॉप लाउंज अबाउट
इशू पॉप आउट आ मीनिंग आम सब जानीगले एबे जब एक्सप्लेन को जीवा जब एक्सप्लेनेशन को जीवा ताले एमती कहबा इन दिस लाइन the poet speaks as if he has undertaken a long research on the bad effects of watching television by visiting a large number of households in Britain. In most houses, he has found the children lazing about all day and staring at the television screen without doing any productive work at all. Next, he indulged in a bit of exaggeration that is nonetheless amusing when he says that sometimes the children stare so hard that their eyeballs fall off, and he has seen a dozen eyeballs rolling about on the floor in one house. तामाने एटी मु कोन कहली बुझ जे इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन आ पूर्वरु पोएट ये जो कथाटी कहवा पूर्व टेलीविजन हार्मफुल इफेक्ट कहवा पूर्व से माने अनेक रिसर्च करचंती अनेक गुडे घर को से बुलिबा को जाइचंती एवं जो जो घर को बुलिया पई जाइचंती वी हैव वॉच देम गैपिंग एट द स्क्रीन एटी देम कहिले कोन बुझेला चिल्ड्रन को बुझेला वी हैव वॉच चिल्ड्रन गैपिंग एट द स्क्रीन माने स्क्रीन आगे पूरा माने कोन स्क्रीन आगे से माने पूरा माने एक लय पार्टी के आ करी माने मेकिंग देयर माउथ्स वाइड ओपन पार्टी आ करी एक लय से स्क्रीन को चाहिचंती माने बल बल करी चाहिचंती दे लॉल एंड स्लॉप लाउंज अबाउट ओके एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट माने एक लय आखि तरासी सिटी अनै थांती ओके तो पोएट को लाइक फॉरगेटिंग देयर ओन एक्जिस्टेंस माने से टीवी देखला बेले से माने एम्ति इन्वॉल्व हो जानती जे दे जस्ट फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड तम चारिपटे कोन घटुची से बुझी पारंती नाही सेति पई पोएट कहले लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ ए डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर सेति पई पोएट कहले जे गत सप्ताह रे आमे जण घर को जाइथिलु से घरे पाखा पाखी 6टा खंड पिला टीवी देखुतले बट से टीवी देखिबारे एते इनग्रस हो जाइथिले जे एते निमग्न हो जाइथिले जे तम चारिपटे कोन घटुतला व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम से माने जानि पारु नथिले की आसुची की जाउ से पई पोएट कहले जे लास्ट वीक रे मु जा घर को जाइथिली मते लागला सेठी के पिला नाहंती ला सेठी डजन आईबॉल माने आईबॉल मान तो जानी पड़तु कौन से आईबॉल ऑन द फ्लोर मान चट्टान ऊपर पिला बसी नथिले कारण से मान तो ऑलरेडी संपूर्ण भाव निजु को भूली जाइथिले तांगर खाली आईबॉल टा एटी पड़ीथिला ता माने एटा गोटे सार्कास्टिकली कहिचंती ता माने मोटे कोन कहली बुझि पाले कि नै सो इन दिस लाइन दाहल स्पीक्स as if he has undertaken a long research on the bad effects of watching television by visiting a large number of households in Britain. In most houses, he has found the children lazing about all day and staring at the television screen without doing any productive work at all. Next, he indulges in a bit of exaggeration that is nonetheless amusing when he says that sometimes the children stare so hard that their eyeballs fall off. And he had seen a dozen eyeballs rolling about on the floor in one house. एबे बुझीगले स्टैंजर मीनिंग कोन एबे देखबा स्टैंजर में कोन क्वेश्चन हे परिबो तो फर्स्ट क्वेश्चन हे परिबो व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन एवरी हाउस तो प्रत्येक घरे पोएट कोन ऑब्जर्व करिसंती आंसर कोन ना इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द चिल्ड्रन आर लाइंग अबाउट and staring at the television screens without doing any productive work कौन सी productive work न करी forgetting their own existence से माने टीवी आगे पूरा पूरा जमती पूरा माने टीवी टाको पूरा पी जाउछन पूरा लागी जाइछंती नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू चिल्ड्रेन स्पेंड देयर टाइम विथ द टेलीविजन तो पिला माने चिल्ड्रेन माने टेलीविजन सहित तांको टाइम केमती स्पेंड करंती चिल्ड्रेन वॉच टेलीविजन गैपिंग एट द स्क्रीन गैपिंग एट द स्क्रीन माने वॉच समथिंग मेकिंग देयर माउथ्स वाइड ओपन माने पार्टी आ करके एक लरे से टीवी स्क्रीन को अनै थांती दे लॉल स्लॉप एंड लाउंज अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज आर टायर्ड एंड स्ट्रेन से माने माने गोटे लेजी पोजिशन ले बसिकी कौन कहते स्नैक खाती एवं ताकू एने तेने पकाती एवं जे पर्यंत तांको आई टायर्ड न होईची स्ट्रेन न होईची से पर्यंत से टीवी पाखरु मुह फेरांती नाही नेक्स्ट हाउ डू चिल्ड्रेन बिहेव व्हाइल वाचिंग टीवी टीवी देखिबा समय चिल्ड्रेन माने केमते बिहेव करंती चिल्ड्रेन सीट एंड स्टेयर ओके इन फ्रंट ऑफ टीवी अंटिल दे आर हिप्नोटाइज एंड एब्सोल्युटली ड्रंक जे पर्यंत से हिप्नोटाइज न होईचंती ओके जे पर्यंत से माने तांको माने एब्सोल्युटली ड्रंक तांको आखि पूरा संपूर्ण थकी न जाइछि से पर्यंत से माने टीवी देखि दान दिस इज द वे दे बिहेव व्हाइल वाचिंग टीवी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर
ये जो कहा गला ए डजन eyeballs on the floor ता माने कौन it means 6 children sitting or lying on the floor and staring at the screen with so much rapt attention that they forget their own existence माने एते एक लेवल से माने से टीवी देखुतले जे पोएट को लागिला से माने से को निजर निजस्व एक्जिस्टेंस को भूली जाइथिले Next, explain the figure of speech used in these lines. Last week, in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. ये जो expression टा कहली last week in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. इतने figure of speech कौन use है? Now the figure of speech used here is hyperbole. इतने जो figure of speech use है, इतना उड़ा hyperbole, which uses exaggeration for emphasis or effect जोटा कि अतिरंजित करी कहा जाए to put emphasis on the hypnotic effect of television जो माने hypnotic effect जे टेलीविजन किपरि भाबरे चिल्ड्रन मान को hypnotize करे ए कथा को गुरुत्व देवा पई the poet says that the previous week at someone's place he had seen half a dozen eyeballs rolling about on the floor बुझिला कि नहीं so the next question name some of the things that the poet has seen in houses which have television तो जो घरे टेलीविजन थाए से घरे पोएट सब कौन नोटिस करिसंती ना चिल्ड्रन आर ऑलवेज गैपिंग एट द टीवी स्क्रीन दे लॉल स्लॉप एंड लाउंज अबाउट व्हाइल वाचिंग द टेलीविजन दे सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड स्टेयर एट इट कंटिन्यूअसली बुझिला कि नहीं नेक्स्ट व्हेन डू आईज पॉप आउट ए तंग आईज ता केतले पॉप आउट हे जाय ना व्हेन द चिल्ड्रन गो ऑन स्टेयरिंग एट द टेलीविजन स्क्रीन फॉर आवर्स then their eyes out of exhaustion pop out I mean come out what is common in almost every house प्रत्येक घरे common कौन in every house children keep sitting or lying lazily in front of the television set एबे मूव करिबा लाइन 13 to 16 पर्यंत ता पूर्व लाइन टा कोन अछि देखि दबा लाइन टा अछि दे sit and stare and sit until they are hypnotized by it until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk प्रथम बुझिबा hypnotized रो माने कोन ना fascinated बा completely absorbed ए जो ghastly junk माने कोन ए ghastly junk हो जोटे phrase the phrase shocking ghastly junk is a description of the program that are shown on the TV रे जो सब प्रोग्राम दिया जाउची से को कहा गला ghastly junk एवं एठी गुटे कथा मन रखिबा द वर्ड hypnotize and drunk are mean to emphasize how TV can get them addicted किपरि भाबे टीवी से मन को पिला मान को अडिक्ट करूची से को बुझेबा पई पोएट दुईटी वर्ड यूज करछन गोटे होची hypnotize गोटे होची drunk एबे ई जो स्टैंजा टी मु पढिली लाइन 13 to 16 तार एग्जैक्ट मीनिंग ता कोन बुझिबा एक्सप्लेनेशन ना कोन Now in these lines, Dahl says that children in every house keep sitting in front of the television set, staring at its screen for hours. Their entire attention is captured by the television screen and they cannot concentrate on anything other than what they are watching. से माने जहाँ देखु थांती ताकु छाडला पर अन्य कोनसी कथा पर कंसंट्रेट करि पारंती नाही. The ghastly junk that appears on the screen of the television keeps them hypnotized. Ghastly junk माने the program that are telecast on the television. तो से टेलीविजन ले जो प्रोग्राम गुडी को टेलीकास्ट होता है तो ए मान से प्रोग्राम गुडी को पिला मान को हिप्नोटाइज कर देई थांती. They seem to have gone drunk with that shocking junk. एवं लागे सते जेमति से shocking junk को से माने गोटा गोटा पी जाउचंती. They are unable to take their eyes off the screen. सेमान तंग माने से टेलीविजन स्क्रीन नु तंग आखी हटेई पारंती नाही because they are fascinated and intoxicated by the meaningless entertainment that is churned out on television, that is telecast on the television. तो टेलीविजन ले टेलीकास्ट होतबा ये जो meaningless entertainment intoxicated माने जो fascinated by intoxicated होंती by the meaningless entertainment द्वारा the ghastly junk that appears on the screen of the television keeps them hypnotized. They seem to have gone drunk with that shocking junk. बुझी पाइले कि नहीं एबे बुझीबा ए जो स्टैंडर्ड मु बुझेइली आकुनी कोन क्वेश्चन हे परिबो तो गोटे प्रथम क्वेश्चन हे परिबो हाउ डज इट कीप देम स्टिल इट कहले बुझेला टेलीविजन को देम कहले चिल्ड्रन त माने हाउ डज चिल्ड्रन माने टेलीविजन कीप चिल्ड्रन स्टिल केमती ना द चिल्ड्रन डू नॉट क्लाइंब आउट ऑफ विंडो सिल्स एंड दे डू नॉट फाइट और किक और पंच व्हाइल वाचिंग टेलीविजन इन दिस वे टेलीविजन मेक्स द चिल्ड्रन स्ट्री सेमती व्हाट हिप्नोटाइजेस चिल्ड्रन एंड हाउ चिल्ड्रन मान को कौन हिप्नोटाइज करे एवं केमिति द पोएट सेज दैट टेलीविजन हिप्नोटाइजेस चिल्ड्रन
he has used a line saying until they are hypnotized by it. कौन पाई ना to indicate to readers the effect of television on children. They stare at the TV with so much attention that they almost get hypnotized by it. Similar to a hypnotized person who does whatever he is dictated. जोड़े person जले hypnotize ही जाई थे ताकु जहाँ कुआ जाए ताकि करे. सेमती children imitate माने whatever is shown on TV. जेमती गोटे पर्सन को हिप्नोटाइज कला परे ताकु मन इच्छा ताकु जहाँ कुआ जाए से सेया ही करि थांती. सेमती ई जो पिला माने टीवी रु जहाँ देखंती ताकु से माने इमिटेट करंती. हेंस टेलीविजन पिला माने को हिप्नोटाइज कर दिए. Next, write the figure of speech used in the following line. They sit and stare and sit. ये जो लाइन टा मु पढ़िली दे सीट एंड स्टेयर एंड सीट ए लाइन ले फिगर ऑफ स्पीच कौन यूज होइछे. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन दे सीट एंड स्टेयर एंड सीट इज एन अलिटरेशन. एटा होचे अलिटरेशन कारण रिपीट होइछे द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. दे सीट एंड स्टेयर पुनी स्टेयर सीट से पे अलिटरेशन. व्हाट डज द फ्रेज ऑल दैट शॉकिंग घास्टली जंक imply in this stanza. ये जो all that shocking ghastly junk माने कौन. Now this phrase is obviously for the contents of the TV programs watched by children so obsessively. तो पिला माने जो पूरा माने obsessively है कि जो TV program देखंती ताकु कुहाइज. By using this phrase, the poet wants to tell that almost all that is dished out to children in the name of information and entertainment has no use for them. ता माने से जो टीवी रे जा जा प्रोग्राम सब टेलीकास्ट होउची जो एंटरटेनमेंट टेलीकास्ट होउची जोटा कि पिला मान को पई नॉट माने गोटे एको पैसा भी बेनिफिट सेतरे किछि मिली न थाए. एबे जिबा नेक्स्ट लाइन 17 टू 25. तो 17 टू 25 से लाइन को जिबा पूर्व प्रथमे हम देखि दबा से लाइन लो कोन लिखाई छी. ओ यस we know it keeps them still. They do not climb out the window sills. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think? To wonder just exactly what this does to your beloved tot? ये होची 7 to 24 लाइन. एबे तार वर्ड नोट लिख दबा. एठी किछि बेसी किछि वर्ड डिफिकल्ट वर्ड नाही. गोटी वर्ड अछि पंच माने हिट विथ फिस्ट. पंच माने जानि छे टॉट माने चाइल्ड. तबे तार एक्सप्लेनेशन कोन ना इन दिस लाइन्स Dahl admits that he knows that television can be a convenient way to keep children occupied. पिला मानकु चुपचाप बसिया पई टेलीविजन हो जोटे सबठु बेस्ट वे. While watching television, children never causes trouble or throw tantrums. Tantrums माने नखरामी बा दुष्टामी करि पारंती नाही. जेतले टीवी देखंती पिला माने एते हिप्नोटाइज हे जानती जे से माने कोनोसी प्रकार दुष्टामी करंती नाही. They sit and keep on staring until they get fully lost in the visuals. से माने एक लय रे जेपर्यंत से विजुअल संपूर्ण भाव रे माने भिजी आई नंती से अब्जॉर्ब हेई नंती से पर्यंत एक लय रे चाहितांती. They sit fixedly at one place as if they were hypnotized by some power and they remain in that position until they become lost in the shockingly unpleasant and useless material shown on the television screen jaku mu कहतली shocking ghastly junk. The parents feel and think that they have relaxation from their children as they would not jump from the windowsill if they watch television. They would not fight, kick or hit. In the meantime, their parents or mother will be able to prepare lunch and wash the dishes in the sink. At the same time, the poet questions the parent of the bad effects which the television has on their children. Oh yes, we know it keeps them still. तामाने हाँ हमें जानिचु ये जो टेलीविजन पाखरे पिला मान को बसे देले पिला माने पूरा स्टील पलटी जेबे माने पूरा स्टील हे जे पूरा चुपचाप हे जेबे. दे डू नॉट क्लाइंब आउट द विंडो सिल्स. दे नेवर फाइट किक और पंच. तामाने से माने झरका ऊपर चढ़ीबेनी कि डियाडी करिबेनी कि काकू पिटा बडा करिबेनी का तो फाइट करिबेनी किक करिबेनी पंच करिबे सब पिला मान को दुष्टामी. तो पिला मान को जदि हम टीवी आगे बसे देबा पिला माने कोनोसी दुष्टामी करिबे नाही. दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच. खाली एतिक नुहे जेतले से माने दुष्टामी न करिवे टीवी आगे बसी जिवे तो पेरेंट्स माने से मानकर लंच एवं से मानकर अदर जो सब वर्क होचे से वर्क करि परिबे एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक एवं सिंक रे जाई तांको डिशेस गुडी को धोई परिबे. नो डाउट एठे हम बुझिले जे ए टेलीविजन ही गोटे बेबी सिटर रो काम करूछ. जेमिति जने बेबी सिटर इज ए पर्सन हु इज पेड टू टेक केयर ऑफ द बेबी व्हेन हिज पेरेंट्स आर आउट. जेतबे तार पेरेंट्स न थाए तले
बेबी सीटर मान को गोटे नियुक्ति दिया जाए पिला मान को चुपचाप करी बसवा पे नो डाउट टेलीविजन से काम करूछ बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक टू वंडर्स जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड थॉट किंतु केबे भाबिछ ए जो 5-10 मिनिट पाई बा आधा घंटा पाई जो पिला को स्टील करके टीवी आगे बसई देलो से आधा घंटा घंटा कर प्रभाव से पिलार माइंड ऊपर कौन पड़ो केबे चिंता करिछ एटा थला स्टैंडर मीनिंग जेटा कि ऑलरेडी बुझी सारी एबे मूव करबा आ गोटे स्टैंडर को आ गोटे स्टैंडर मूव करबो देखिबा स्टैंडर रे कोन क्वेश्चन अछि फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डज इट कीप देम स्टिल सो आंसर कोन हबो ना चिल्ड्रन गेट सो एंगेज्ड इन वाचिंग टेलीविजन दैट दे barely engage in any other activity and become nearly immobile in front of the television set ता माने टेलीविजन सेट रे से माने पूरा इमोबाइल माने पूरा अचल ही जानती ओके एवं अन्य कोनोसी एक्टिविटी रे एंगेज होंती नहीं पूरा स्टिल पलटी जानती नीरव पलटी जानती द पोएट सेज इट कीप्स देम स्टिल व्हाट कीप्स द चिल्ड्रन स्टिल एंड हाउ द टेलीविजन सेट कीप्स द चिल्ड्रन hypnotized as they watch all the junk that it telecasts. Next question, how does television prove to be useful and convenient for the parents? Television proves to be useful for the parents because it keeps their children still and occupied. The children then do not indulge in any kind of fights or any kind of mischievous activities. It allows the parents to do their household chores peacefully. जहाँ फल parents माने तांको घर कार्य peacefully करी पारंती. Next question, why do parents let their children watch TV? तो parents माने तांको पिला मान को काहे की TV देखिया को दियंती ना children always disturb their parents. Okay, while the latter do household work, cook food or wash utensils. ता माने जेते बळे पेरेंट्स माने हाउस होल्ड काम करती जथा रोसई करिबा हो बासन माजिबा हो से समय पिला माने बहुत डिस्टर्ब करती दे फाइट विथ ईच अदर एंड डिस्टर्ब द पेरेंट्स सो द पेरेंट्स अलाउ देम टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी सेट एंड टू रिमेन एंगेज जाफल से माने डिस्टर्ब करिवे नाही सेट पे से माने टीवी देखिया को दियंती नेक्स्ट डू यू थिंक टीवी डज द रोल ऑफ ए बेबी सिटर जस्टिफाई तो मुझे लागु कि टीवी गोटे बेबी सिटर रोल प्ले करूची एबे आंसर टा क्लियर करो Yes, TV performs the role of a babysitter. Kemti? No, it keeps them engaged so that they do not disturb their parents in their household work. But a babysitter काम कौन? A babysitter is a person who is paid. जहाँ को salary दिया जाए. कौन पाइन? To take care of the baby when their parents are out. जिते पेरेंट्स माने घरे न थांती तांका बेबी को केयर न पाई जा को अपॉइंट करा जाय ताको जे बेबी सिटर सेम काम कोन करूची टीवी करूची कारण जिते पिला मान को तांका पेरेंट्स माने टीवी आगे बसई दउचंती से पिला माने पूरा स्टील पलटी जाउचंती माने स्टील माने न जे मटेरियल माने पूरा चुपचाप पलटी जाउचंती से माने पूरा एनग्रॉस हे जाउचंती टीवी देखिबारे एबे मूव करबा लाइन 25 टू 33 ए लाइन को आरंभ करिया पूर्व प्रथमे लेट मी मेक इट क्लियर ए लाइन रो प्रतिटी जाक लाइन गुडी को पे स्टैंडर प्रतिटी जाक लाइन कैपिटल लेटर लिखा जाय छै कोन लिखा छै ना इट रॉट्स द सेंस इन द हेड इट किल्स इमेजिनेशन डेड इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड इट मेक्स ए चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड ए फैंटेसी ऑफ फेयरी लैंड his brain becomes as soft as cheese his power of thinking rust and freeze he cannot think he only sees तो ये जो स्टैंजा को बुझिबा पई ए स्टैंजा टी को बुझिबा पई प्रथमे स्टैंजा रे थिबा वर्ड नोट को बुझि जिबा तो प्रथमे गोटे वर्ड आसला रॉट्स माने कोन ना डिकेज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंगीज माने एठी रॉट माने माने डिके ही जिबा ओके और ब्लॉक और स्लोन डाउन द प्रोसेस ये होची रॉट्स रो माने सेमति क्लटर्स माने कोन ना क्लटर्स माने होची कवर्स और फिल समथिंग विथ एन अनटिडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स ता माने किछि अपरिष्कार जिंस द्वारा कवर ही जिबा फैंटेसी माने कोन फैंटास्टिक माने होची ए जेनरे ऑफ इमेजिनेटिव फिक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग मैजिक एंड एडवेंचर स्पेशली इन ए सेटिंग अदर देन ए रियल वर्ल्ड ता माने परिकल्पना गोटे इमेजिनरी स्टोरी ता कोन फैंटासी रस्ट मान तो जानिथिबा कलंकी लागि जिबा forming a red or orange coating on the surface of iron when exposed to air or moisture ए बुझिबा ई जो स्टैंजा टी मु पढिली तार मीनिंग ता कोन ना देन द पोएट बाय राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स ए देखो सबु जगह लाइन रो एंटायर स्टैंजा रो सबु जगह लाइन कैपिटल लेटर तो then the poet by writing in capital letters makes an emphasis on the negative impacts of television on children
when they watch too much television, it gradually stops the progress of their power of understanding and imagining things around them. Watching the television fills their mind with so much material and stop they hardly think and imagine freely of their own. The originality of their thoughts is completely lost. A child's mind becomes blocked to the natural world. They no longer enjoy the natural scenery. They fail to enjoy the world of fantasy and fairyland. तामाने मु एठी कोन कहली एठी जो थिला जे ई सबु जाक स्टैंजार प्रतिटी लाइन कैपिटल लेटर थिला काहे कि ना एथि पई थिला ए स्टैंजाटी एंटायर स्टैंजाटी कहूची द अनडिजायरेबल कन्सिक्वेंस ऑफ वाचिंग टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन पिला मानक ऊपर टीवी देखिबार कोन सब को परिणाम पड़े तो प्रथमे कहूची इट रॉट्स द सेंस इन द हेड तो जो रॉट्स रो माने मुठी ऑलरेडी कहि से जे डीके ता माने तांकर जो गुटे बुझीबा शक्ति थाए तांग मुंडरे तो से बुझीबा शक्ति को संपूर्ण भाबे नष्ट कर दिए इट किल्स इमेजिनेशन डेड तो पिला माने जेहेतु फैंटासी स्टोरी गुडा को देखंती तो तांका भीतर इमेजिनेशन बा इमेजिनरी स्किल ता डेवलप ही पारे नाही इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड ये कोन करे ना माइंड रो जो सेंसिटिव ऑर्गन जे के थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग जो ऑर्गन गुडी को हेल्प करे जो पार्ट्स गुडी को हेल्प करे ताकू कोन कर दिए ताकू मेसी कर दिए इट मेक्स ए चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड he can no longer understand a fantasy and a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His power of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. तो बर्तमान एक भल से बुझिबा पई ए स्टैंजा को बेस करी जो क्वेश्चन अछि ताको डिस्कशन कर देले आमे बहुत सुंदर भाबे बुझि जिबा तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट आर द अनडिजायरेबल कन्सिक्वेंस ऑफ वाचिंग टेलीविजन तो टेलीविजन देखि माने टेलीविजन रो अनडिजायरेबल कन्सिक्वेंस कोन Now the undesirable consequence of watching television is that it rots the sense, kills imagination, clogs and clutters of the mind, rots the power of thinking. He cannot think, cannot differentiate between a fantasy and a fairyland. The next question, so why does the poet think that a child cannot understand a fantasy or fairyland? The ability to understand a fantasy or fairyland calls for application of creativity and imagination. As the poet says, the unproductive and useless practice of watching television for hours and hours continuously has severely affected a child's creativity and imagination. That's why he or she cannot understand a fantasy or fairyland. Next, why does the poet use all capital letter to end his poem? The poet has employed capital letters for the purpose of conveying the harmful effects of television addiction on children's mind and brain. किपरि भाबरे children mind और brain ले टेलीविजन नो हार्मफुल इफेक्ट पड़ी थाए ताकू बुझिबा पई से स्टैंजा रे सबु जाक लाइन गुडी को कैपिटल लेटर यूज करिसंती नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कंपैरिजन डज ही मेक टू प्रूव हिज पॉइंट तांको पॉइंट को प्रूव करिया पई से कोन माने कंपैरिजन करिसंती टू प्रूव हिज पॉइंट द पोएट हैज यूज्ड ए फिगर ऑफ स्पीच कोन ता ना सिमिली कौन से लाइन टा हिज ब्रेन बिकम्स as soft as cheese. Here the brain of a child is being compared to cheese in terms of softness. चीज माने जानि चीज पूरा कौन था सॉफ्ट था ए टीवी देखिबा द्वारा पिलाटीर ब्रेन पूरा सॉफ्ट हो जाए सो दैट से ब्रेन रो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कमी जाए द पोएट स्टेट्स दैट द चिल्ड्रन हु वॉच टेलीविजन excessively their brain becomes soft as cheese. According to the poet, what ill effect does television have on children? तो आंसर में लिखिबा टेलीविजन प्रोड्यूसेस डलनेस इन देयर माइंड इट किल्स देयर इमेजिनेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी इट hypnotizes them and fills them with junk. Next, how does television kill the imagination of a children? The ability to think of new ideas diminishes माने कमी जाए when a child is passively engaged in watching television. जितने गोटे छोटो पिला माने संपूर्ण भाव टीवी देखिबार नियोजित हो जाए watching too much television destroys children's ability to understand the world of fantasy. Their thinking power rusts and freezes. Name and explain the figure of speech used in this line. It kills their imagination dead. ये जो लाइन रे कौन figure of speech यूज है the figure of speech used in this line it kills their imagination dead is personification.
आम तो अलरेडी आगुरी सब जाचे सब फिगर ऑफ स्पीच विषय में अलरेडी फिगर ऑफ स्पीच विषय गोटे वीडियो करती चाहिए तो देखिपर इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए थिंग और आइडिया आज ए पर्सन तार जो गोटे थिंग को गोटे पर्सन रो क्वालिटी दि जाए कह जाए पर्सनिफिकेशन हियर डहल यूजेस पर्सनिफिकेशन इन दिस लाइन तार इट किल्स देयर इमेजिनेशन डेड तार किलिंग कहार एबिलिटी मनुष्यर एबिलिटी तो टीवी ये कौन करुच्ची किल करुच्ची कौन किल करुच्ची ना पिला मानकर इमेजिनेशन को डेड कर दउछि ही गिव्स टेलीविजन द एबिलिटी टू किल एंड गिव्स इमेजिनेशन द एबिलिटी टू डाई एट इट्स हैंड सो एटी फिगर ऑफ स्पीच होछि कौन पर्सनिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू ब्रेन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम सॉफ्ट एज चीज ओके केमती बा काहे गोटे छोट पिलार ब्रेन चीज भलिया सॉफ्ट हो जाए ना अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूअस टीवी वाचिंग क्लॉग्स द ब्रेन according to the poet. He also says that it kills the creativity of children. They just keep seeing what is being shown without thinking. There is nothing to imagine as everything is being shown. कारण imagine करिया किछि नाही सब कुछ टीवी रे देखा जाए. This results in their brain becoming soft like cheese that cannot imagine or understand fantasies. Next question. What is the poet's intention behind the line? He cannot think, he only sees. ए लाइन रो पछर इंटेंशन कौन ना द पॉइंट वांट्स टू वार्न द पेरेंट्स अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टीवी दिस लाइन क्लियरली स्टेट्स दैट creativity and imagination of a child get damaged by watching TV every day. The child is lost in a virtual world, oblivious of his surrounding, means forgetting his own existence, and his analytic power does not develop. The poet categorically says that too much of watching TV spoils the creativity of children as they are not able to use their brain to understand things. से ब्रेन को यूज करी पारंती नहीं टू अंडरस्टैंड थिंग्स. ये थिला पिला माने टेलीविजन पोएम को नहीं ताको हमें लाइन बाय लाइन डिस्कशन कले एवं प्रतिटी लाइन को नहीं जहाँ जहाँ क्वेश्चन हो पारिबो जो जो एंगल क्वेश्चन हो पारिबो से गुडा को सब मु डिस्कशन कली. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन. पुणी देखा हबो आउ गोटे टॉपिक सहित. सेतो जाय बहुत खुशी रुह बहुत हस. जय जगन्नाथ.